will take nearly 100 years for the world to attain gender parity. Well, that's what the World Economic Forum's Global Gender Gap Report says. It goes on to add that globally, only 55% of the women are engaged in the labor market as opposed to 78% of the men. But I believe that change is possible and necessary, not only for the women, but for the organizations that want to succeed in the future of work. At Amoeboids, we have developed a comprehensive approach to improving gender diversity, which is one of the contributing factors in Amoeboids being recognized as a great place to work. We have created partnerships to encourage hiring of women and providing our women employees more opportunities to grow within the organization. Our remote first work environment gives an opportunity to all of our women employees to work from anywhere. Our female friendly policies ensure that we become an employer of choice for women. And our focused approach towards providing business skills and leadership training to women employees ensures we are grooming more women to take up leadership positions in the due course. But let me be honest, this is not going to be an easy road. It takes a lot to break old habits and to change mindsets. But we are committed towards making Amoeboids a gender equal workplace. This Women's Day, we bring you two women achievers, Chhaya Bhatt and Suchitra Kharwandikar, as they share insights into their success stories and their life journeys. Hello all, once again. Today we have with us unique guests for the celebration of International Women's Day. Both of them have achieved their respective career, different hallmarks and records. I will introduce them alphabetically. So we have today Chhaya Bhatt, child prodigy in sports fraternity of Madhya Pradesh, turned as most medal athlete in powerlifting. She's playing powerlifting from decade of 80s. She has 10 Asian medals and 29 national medals on her name in powerlifting. She was detected colon cancer in March 2012. She recovered it, combated it in 2014. After recovery, her striding performance is sheer phenomenal. With 1 gold and 1 bronze medal at Asian bench press, and number of more than 15 awards in nationals is really a great bounce back stories. She has a huge number of awards, but I'm mentioning here 2 prestigious ones. First, the Maharashtra State Rajmata Ahilya Stri Shakti Award and Madhya Pradesh government's Vikramaditya Award for sports person in athletes. I request all to welcome her with a round of applause. Thank you. Thank you, everybody. Our second guest for the evening is Suchitra Kharwandikar. In spite of orthopedic disability, her instincts to learn made her explore both sports and artistry. She's a professional Mehendi artist holding world record of 1,622 hands. She later got into swimming and says the greatest passion she holds more than 15 medals in national para swimming competitions. She has the passion in the beauty pageant has made her to win Best Inspirational Model Award for Mystique Mrs. India 2020, VPR Mrs. India 2020 Miss Congeniality, adding one more accolade that she is India's only one wheelchair drummer. Okay, so welcome Suchitra Kharwandikar once again, and I request a big round of applause for her also. Thank you. Yeah. We have decided to have a panel discussion with both of the guests,
and Mithila and Shweta from Amoeboids will be taking over from me. Over to you, Mithila and Shweta. Thanks, Kanai. Thanks for the introduction. It's really a pleasure to have this opportunity and have a conversation with such leading ladies of India. We see a lot of inspirational success stories in sports, achieving and earning a name for themselves. But it is a story of sportsmen turning failure into inspirational success stories that has the real flavor and something one we can hope from. So one such story is of our guest today, Ma'am Chhaya. So my first question goes to her. So ma'am, what is that which inspired you to become an athlete? एज अ सबसे पहले बड़ी बात तो मैं बोलना चाहूँगी कि खिलाड़ी खिलाड़ी तो बनने के लिए इंस्पायर करने के लिए मेरे पेरेंट्स मदर स्पेशली मेरी मदर उनका मुझे बहुत वो रहा और जैसे बचपन से बालक बड़ो बोलते हैं ना जैसे बचपन से ही उनको सिखाया जाता है तो बचपन से ही मुझे उस हिसाब से तैयार किया गया है मैं तैयार हुई फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट आई वाज प्लेइंग until now till I have now completed 52 and still I am playing up to achievement international level तक है और मेरा सराउंडिंग भी वैसा ही रहा स्कूल देन कॉलेज के बाद फिर मदर का बहुत स्ट्रांगली मुझे सपोर्ट था यू कैन डू इट एंड कंटिन्यूसली मैं उस माहौल में घटती गई जैसे जैसे मेरे को साथ मिलता गया मैं आगे आगे उसके साथ से चलती गई सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं यही बोलूँगी कि माय मदर वाज वेरी स्ट्रांग कि बच्चों ने लड़कियों ने घर में बैठ के काम नहीं करने रहना है दे हैव टू डू समथिंग इन देयर लाइफ और मेरा कल स्पोर्ट्स की तरफ था इसलिए मेरे को एनकरेज करते गए उस तरफ और मैं आगे बढ़ती Very inspiring. Thanks. Yeah. That's really very inspiring. I want to ask second question to Suchitra ma'am. Yes. Sports and art are two most universal languages that we have, and they enable us to express ourselves physically, emotionally, and even intellectually. This allows us to connect and communicate with each other around the world, crossing borders, cultures, languages, and generations. If we blend these two languages into one, I believe we could create a powerful new vehicle and platform that could reach and connect with even bigger audience. So here is my second question: like art versus sport. How did you marry both of these fields together, and what is the advantage of being an artist in sports or vice versa? Okay. First, art is my bread butter. मैं आर्टिस्ट थी पहले से, तो उसमें ही मैं काम कर रही थी और मेरे पूरे क्लासेस थे तो बैठ के काम था, तो इस हिसाब से मैंने फिर मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी की भी ज़रूरत थी, तो मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया और स्विमिंग करते करते फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसमें भी कोई मैं करियर कर सकती हूँ क्योंकि ओनली स्विमिंग इज द गेम जहाँ पे जो मैं मुझे अलाउड था फिजिकली, अदरवाइज बाकी कोई गेम मुझे अलाउड नहीं था। तो स्विमिंग भी मैंने ज्वाइन किया और फिर आर्ट में भी मेरी मास्टरी है और अभी स्विमिंग में भी मैंने नेशनल मेडल्स जीते हैं। तो ये बोथ दे आर माय पैशन एज वेल हॉबी। A very nice blend of art and sports. So या I want to ask question to Chhaya ma'am now. Each year in sports, there are very handful of exceptional accomplishments, some of which are record setting. And generally speaking, every time a new record is set means another record has been broken. Talking about the achievements, we want to know about your latest accolade and how you are preparing for it. How you are prepared for it. बेसिकली मेरे आई कैन से दैट कि कंपटीशन सिर्फ खुद से होती है एज यू टोल्ड मी कि यू हैव टू सेट न्यू रिकॉर्ड्स तो न्यू रिकॉर्ड्स अपन अपने लिए ही सेट करते हैं ये मेरा मानना है। सेकेंडली आप जो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने कैसे तैयारियां की हैं कैसे आपके नए अचीवमेंट कैलकुलेशन आपके लिए तो दैट इज एन बहुत पुराना फ्रॉम सिंस 1982 आई एम प्लेइंग सिंस 1982 मैं जो कंटिन्यू स्पोर्ट्स कर रही हूँ और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी उस तरह से तैयार हो जाती है
कि whenever we come on ground, एक तो mentally we are very fit because जैसे मैं लोहा खेलती हूँ, I play with iron. तो आयरन खेलना है तो सबसे पहले चीज आपको ऐसा है कि यू हैव टू वन आयरन. अगर आप आयरन पे चढ़ाई नहीं करोगे तो यू कैन नॉट लिफ्ट दैट अप. तो किसी भी चीज के लिए तो हम बेस से ही शुरू से ही उस हिसाब से मेंटली तैयार करते हैं. सेकेंडली अभी जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं तो रिसेंट अचीवमेंट्स के लिए जैसे मेरा तो लास्ट वर्ष कैंसर के बाद आया हुआ गोल्ड मेडल था अभी तो एशिया का था. And continuing from 2014 जब मैं कैंसर से उठी उसके बाद से कंटिन्यूस मेरा नेशनल मेडल है और इंटरनेशनल एक ही खेला था उसमें मेरा मेडल है. तो उसके लिए ग्रेजुअल physical fitness I have to maintain on my own way in my way. It is not necessarily I will go to a walk or I will go to a gym or I will go in my own way. I maintain my body and I maintain my fitness. और जब लास्ट 3 months जैसा रहता है मेरे कंपटीशन का बिकॉज बीइंग एन पेशेंट सेकेंडली बीइंग द एज बार एवरीथिंग आई उस हिसाब से मैं अपने आप को जज करके उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके फिर उस हिसाब से वर्कआउट करके जिसमें मेरा मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकूं. तो उसकी तैयारी जब लास्ट 3 months होता है इसमें फिर नहीं जाते मैं जिम पे. बाकी टाइम I maintain my physical activities according to my condition. जैसे मेरी कंडीशन होगी मेजर पॉइंट इज कि मेरे को अपने बॉडी को खत्म नहीं होने देना, मेरी बॉडी को टूटने नहीं देना. बिकॉज व्हेन द बॉडी गेट आपकी अगर बॉडी टूटना का अर्थ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब आपकी बॉडी उसमें चली जाएगी क्या बोलना चाहिए फटीग की तरफ जाएगी या ओवर एग्जॉस्ट हो जाएगी वो मेरा एक्चुअल उसको नहीं होने देना. दैट इज मेन मेरा मोटो रहता है कि आई हैव टू बी ऑन माई नॉर्मल ये. और जैसे ही मेरे को पता है कि मेरा अभी कंपटीशन का टाइम है तो लास्ट 3 months आई डू फॉर ए विगरस प्रैक्टिस एंड आई अचीव माई गोल्स अकॉर्डिंग टू दैट. जैसा मेरा मेहनत होगा उस हिसाब से मेरे अचीवमेंट होते हैं बिकॉज अवर बॉडी इज टोन्ड फ्रॉम 1982. आज हम खेलने नहीं जा रहे हैं एंड दैट टाइम प्रैक्टिसिंग. तो हम लोग सोचे लाइफ इज गोइंग ऑन पता नहीं कॉलेज में जाएंगे एंड रेगुलर कॉलेज गोइंग पर्सन नॉट बंक रेगुलर कॉलेज गोइंग. और उसमें भी जो एक टाइम था कि हमारी बस आ जाएगी कॉलेज की वर्कआउट का टाइम होने वाला है दैट बस वी कम बैक. व्हाट वी कैन से कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी आर द टू पार्ट्स जिसने मेरे को अभी तक बचा के रखा है एंड जिसने इंस्पायर जैसे आपने मैंने पहले से बताया था कि इंस्पायर्ड थी तो वही सब चीजें हमारे में इनकलकेट बचपन से ही होती गई थी. तो ये चीजें हमको अभी भी फायदा दे रहे हैं कि कुछ रूल्स एंड वैल्यूज जो हमने अपने बना के रखे हैं दैट हेल्प्स मी टू कम डू माय वर्कआउट डू माय अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन माय एज माय. लेकिन आई नेवर मैं कभी अपने आप को ये नहीं सोचती हूँ कि आई एम क्रॉस द एज. मेरे साथ जो भी होगा जैसे आई एम विद यू आई विल बी ऑफ योर एज. मेरे को जिस कंपटीशन में उतरना है जैसे मेरी कंपटीशन रहती है 23 साल की लड़कियों के साथ 22 साल की लड़कियों के साथ. So I behave like that. They are not in the behavior. Behavior is maturity level. But I make my mind कि नहीं I'm fit more than that. Means आधा गेम mentally होता है ना आधा गेम physically होता है. Like that I prepare myself. And rest is destiny. जैसे आपका लाइफ लिखा है वैसे वैसे आपने जाना है. बिलीव इन दैट. आई बिलीव पूरा मैं बिलीव करती हूँ उसमें. लेकिन मेहनत करना you have to work hard. Without hard work you cannot achieve anything. Reasons है सबके पास अपने अपने reasons है I agree. लेकिन उन reasons को overcome करके आना ही पड़ता है. अगर आपको अपने लाइफ में अपने achievements करना है तो ये आपको. So my next question is to Ma'am Suchitra. Yes. So women and beauty, right? These are two terms which go hand in hand. Yes. So and we've understood that ma'am, you have won so many awards, beauty pageants and things. So basically, you have changed the entire meaning of participating in beauty pageants. Yes. That it's not meant only for the models, but it is for every woman who is beautiful in her own way, right? Beauty is Yes. defined as a reflection of one's values, thoughts, and attitude. So I want to ask you a question. What urged you to participate in the beauty pageant? हाँ, एक्चुअली मुझे ब्यूटी में मतलब मुझे मेकअप में मुझे अच्छे ड्रेसेस पहनने में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से.
और ब्यूटी पेजेंट इज द बेस्ट वे टू वेयर ऑल दिस थिंग्स. आप मतलब ऑफिशियली सब मेकअप कर सकते हो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन सकते हो. तो और मुझे वो क्राउन का बड़ा अट्रैक्शन था पहले से. मैंने जब भी मैं मिस इंडिया देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये क्राउन मिलना चाहिए एक बार. तो फिर बाद में तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी ब्यूटी पेजेंट्स का पता चल रहा था, तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया. और क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे थी, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, मगर वीपीआर ने मुझे अलाउ किया पार्टिसिपेट करने के लिए. और इट्स माय वेरी ओल्ड ड्रीम. तो वो सपना पूरा हो गया. और जस्ट बिकॉज आई लाइक ग्लैमर, आई लाइक टू लुक ब्यूटीफुल, और मुझे वो क्राउन का बड़ा अट्रैक्शन था, इसलिए मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया. और मेरी पर्सनालिटी वैसी है, I can present myself very well in front of peoples. Thank you. So that's very sweet. Thanks. So next question is to Ma'am Chhaya. As a human, we have ups and downs, right? So the ups builds your ego, and the downs builds your character. For an athlete, setback is just a setup to come back, if you look in a correct lens, right? So my question to you, ma'am, is post your cancer recovery, how did you bounce back to sports? What extra efforts were required, and how was your experience totally? There was literally a U-turn in my life because I was continuing my sports, and in March 2000, I think 12, I got gold medal in India, and in February, and in March 19th, I got a stomach ache, and it was diagnosed as colon cancer. So in one day, the whole life has been changed. We came to house while getting that result out, and I told my husband and my father-in-law, okay, this is the day what we are living now, past and no future. We are not going to think anything about future also, no, we are not going to see about our past also, what has happened. जो भी हो गया पीछे लाइफ में, तो जैसा दिन आएगा वैसे जिएंगे. एंड वी हैव स्टार्टेड अवर ट्रीटमेंट. मेरा 3 क्या वो हुआ, ऑपरेशन हुआ. क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो लीक हो गया था मेरा ऑपरेशन विद इन 3 days, एंड दैट गोज टू सेप्टिसीमिया गया. उसके बाद मेरे ऐसा हुआ कि आइलोस्टोमी किया गया मेरा उसी टाइम, 3rd day. और वो आइलोस्टोमी बैग लगा रहता है पेट पे, जहाँ से कोलन से एक्सक्रीट होता है, वो था मुझे. 9 months तो वैसे था, 8 कीमोस था मेरे को. So that was a journey which I have undergoing and enjoying that, and we can say enjoying because I cannot cry for that. जैसे मैं बता रही थी आपको, तो फिर उस जो 9 months था, मैंने उसको प्रॉपरली जैसे जैसे दिन आ रहा था वैसे जीना शुरू किया. फैमिली मेंबर्स को भी, फैमिली मेंबर्स पर अपने अपने तरह से पहले वो करते थे, लेकिन किसी ने मेरे तरफ आके ऐसा नहीं किया कि कुछ हो गया, क्या हो गया. एंड वी एंजॉयड, उसमें से हम बाहर आए. देन आई स्टार्टेड माई लाइफ अगेन, एंड विद इन 6 months आई जॉइन जिम. मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था 5 years यू हैव विद यू. तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि आई वांट टू प्ले, मैं ऐसे बेड पे मैं रहना नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस. तो ही सेड ओके. ही वाज वेरी, इन्होंने बहुत स्ट्रांगली उसको हैंडल किया कि ओके चलो खेल लेंगे, लोग जैसा होगा देखेंगे आगे. देन मैंने धीरे धीरे खेलना शुरू किया. अगेन स्टार्टेड, क्योंकि मेरा एब्डोमेन था, तो बेंच प्रेस इज फुल बॉडी यूज होती है, बेंच प्रेस देखने के लिए सिर्फ हाथ से होती है, लेकिन उसको ग्रेजुअली मैंने समझदारी से उसको कर करके अगेन इन द January 2014, I got 2 gold, 2 bronze in India in bench press competition, and from January 2014 till date, that is last month in Goa in 2021, I am having a national medal in bench press. We also have a question to you. So what advice would you give young women who are watching on how to deal with pressures they face today? So आप क्या एडवाइस दोगी? सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे सुन रहा है, ये तो शायद बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने तो पूछा है कि व्हाट एडवाइस यू विल गिव. सबसे पहली चीज तो वुमेन, बीइंग ए वुमेन, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो. आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करोगे,
तब आप किसी को वो नहीं कर पाओगे। जितना प्यार अपने आप से करोगे, अपना केयर करोगे, अपना जो मैंने देखा है अपने लाइफ में, मैं उसमें से एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कहीं अपने आप को अपन बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं, वी नेग्लेक्ट आवरसेल्फ लॉट। तो सबसे पहले अपन ने अपने आप से प्यार करना चाहिए। सेकेंडली, यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी ईच एंड एवरीथिंग। यू शुड अवॉइड नेगेटिविटी अराउंड यू। कोई जरूरत नहीं है क्या कौन कर रहा है, क्या कौन नहीं कर रहा है, उसमें अपन ने जाके अपने आप को बिजी करके अपना सारा ग्रोथ कुंठित कर लेना है। दैट इज नॉट द पार्ट। आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपके आजू बाजू की नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना है, और आपके जो भी डिसीजंस हैं दैट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट इट शुड नॉट बी, देयर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विथ योर रूल्स एंड वैल्यूज। आपके कुछ रूल्स एंड वैल्यूज एंड डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। कि मेरे को ये चीज बहुत अच्छी मिलने वाली है तो आई विल कॉम्प्रोमाइज, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी स्टबर्न और जिद्दी होना चाहिए। इन केस एनी सिचुएशन कहे कुछ भी हो सकती है, घर की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, आपके पढ़ाई की हो सकती है, आपका ऑफिस जहाँ भी आप जी रहे हो, किसी चीज में भी हो सकती है। तो यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही, बट यू शुड हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन योर लाइफ व्हिच आपको एक करेक्ट दौरा देते रहता है, आपके हाथ में एक धागा रहता है जिसको आप वो कर सकते हैं कि इसको मेरे को कितना तानना है, और वो दौरा, वो आपका धागा आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। दैट पार्ट आई विल ऑलवेज से यू कि आपने उतना अगर वो करके रखते हैं, और अपने आप का बहुत क्लियर आपके व्यूज होना चाहिए। यू शुड हैव क्लियरिटी कि व्हाट यू वांट टू बी एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अगर वो क्लियरिटी आपके पास है और आपको उस पर नहीं है तो डू वर्क ऑन दैट, आप काम करो उस पर, लेकिन अपने आप को क्लियरिटी की तरफ लेके जाओ, फोकस रहो। और उसमें क्लैरिटी में ये चीज नहीं होना चाहिए कि हमें बड़ों का अपमान करना है और छोटों को अपने को डांटना है। दैट इज नॉट क्लैरिटी। क्लैरिटी इज कि मेरे को सबको साथ में लेके चल के मेरे को अपने लाइफ में कहाँ आगे निकलना है। दैट इज द पार्ट, एंड यू शुड बी फर्म ऑन दैट। यू शुड बी फर्म ऑन दैट कि मेरे को यहाँ जाना है, लेकिन मेरे कारण किसी को तकलीफ होना चाहिए, मेरे कारण किसी का कुछ अपमान होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए उसमें। उसको बचाते हुए उसके लिए, तो उसके लिए थोड़े अपने को तकलीफें आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब एक अपन ने निकल गया और मिल जाएगा, तो उसको कुछ अपने को सैक्रिफाइसेस रहते हैं, कुछ अपने को एफर्ट्स रहते हैं, और नथिंग यू कैन गेट विदाउट हार्ड वर्क। सबसे बड़ी चीज है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू, सबसे बड़ी चीज आपको बिलीव रखना है, हार्ड वर्क रखना है, और क्या बोलना चाहिए, पेशेंस रखना है हर चीज के लिए। कि आज मैंने निकली हूँ, मैं कल मेरे को अचीवमेंट हो जाना है, ऐसे होता नहीं है। अगर होता है तो यू टेक बहुत गलत रास्ते भी आप उसमें एक्वायर करने के लिए, तो जैसे मैंने बोला, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो ये थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि हम इतने सालों से घर के बाहर आके, और आई नेवर प्लेड द गोल। मैंने कभी लड़कियों में नहीं खेला, क्योंकि मेरे गेम में एथलेटिक्स करती थी, उसमें मैंने डिस्कस थ्रो करती थी। So my question is to Ma'am Suchitra. Yeah. What advice? Same question. What advice would you give young women, in order to tackle the pressure they face today? ओके, फर्स्ट थिंग इज, जैसे मैम ने बोला, दीदी ने बोला कि खुद से प्यार करो, खुद को थोड़ी प्रायोरिटी दो। हम लोग नहीं देते हैं, पहले इसका देखूं उसका देखूं, फिर अगर टाइम मिले तो मेरे लिए कुछ करूं, तो ऐसे नहीं होता है। खुद को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम लोग अननोइंगली हमारे माइंड में खुद के लिए बाउंड्री सेट कर देते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं जा सकती। तो कोई जरूरत नहीं बाउंड्रीज डालने की। खुद को ओपन रखो, खुद के माइंड को ओपन रखो। आपके ड्रीम्स को अचीव करने की आप में एबिलिटी है, आप ड्रीम्स देखो। तो पहले लड़कियां सोचती नहीं कि मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे किस हाइट तक पहुंचना है, मुझे क्या पाना है, इसके बारे में सोचा ही नहीं जाता। कोई जो जो कुछ मिला, अभी एक छोटा जॉब मिला है, चलो आई एम हैप्पी इन दैट। तो हम लोग खुद को एक कंफर्ट जोन में रखते हैं कि चलो अच्छा जॉब है मेरे पास, मुझे जो पैसे चाहिए वो मिल रहे हैं, तो इनफ। कोई अचीवमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, तो रूटीन लाइफ हमारी चालू रहती है। और रिगार्डिंग प्रेशर, तो प्रेशर तो हर एक को होता है, तो उसको हैंडल, मतलब इतना किसी भी चीज को इतनी अहमियत मत दो जो आपके दिमाग में प्रेशर डाले। ठीक है, हर बात, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो उस हिसाब से आप अगर सोचोगे ठीक से किस बात की आपको प्रेशर आ रही है, किस बात की जॉब की प्रेशर है या क्या है, तो आप उसके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। मगर आपके एम्स को कभी मत भूलना, आपके ड्रीम्स को कभी मत भूलना। ड्रीम देखो और उसे पूरा करने की
पूरी कोशिश करो, आपके ड्रीम्स फॉर श्योर आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो। और हार्डवर्क के अलावा, हार्डवर्क को कोई ऑप्शन है नहीं, आपको हार्डवर्क करना ही चाहिए। Focus, dedication, and achieving यस goals. That is something which we need to take care of in pressure. यस, That's very nice. Thanks. Thank you so थैंक much. यू। So, I would like to call out Ashish to, you know, say a few words. Thank you. Thank you very much. I think it's been a truly very inspiring conversation. Thank you, Chhaya ma'am. Thank you, Suchitra ma'am, for sharing your inspiring story. Thank It you, has sir. been, I mean, yeah, I think there have been moments where I really sort of went through thinking, how challenging it would have been. I mean, it's one thing to kind of just imagine and one thing to kind of live. So truly hats off to you. So I think really commendable. I'd like to sort of really applaud here, and thank you all for actually bringing and sharing this, very personal stories that we could relate to and learn from your experiences. Thank you so much, ma'am. I kind of My pleasure. I kind of would like to kind of say a few words, right? I mean, I guess there's a lot happening now with uh, people now getting awareness about gender diversity at work, International Women's Day, everything, right? So I guess one of the very famous quotes of I'd like to kind of take a quote of Martin Luther King, who sort of supported Black Lives Matter, or probably now you see a lot of people talking about it, right? So individual has not started living, I feel, until he has risen above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of humanity. Which means, I mean, yeah, I guess, keeping the larger picture in mind, and how you think you would want to kind of, how will you play a role, right? I think for every woman there are, I mean, I guess uh, you rightly talked about, self-care, keeping open-minded without boundaries, immersing oneself into positivity. I think these are the pillars, right? Hard work, dedication is, of course, given nowadays, right? You have to sort of, there's no other way to do it. But I think these are very good points that you sort of talked about, which I guess our colleagues here in the organization will sort of relate to, and will take away from that. And at the same time, keeping to the values and disciplines is so much important while you're focusing and having a clarity on your goals. So just imagine, I mean, I think having a gender equal world, a world free of bias, nobody is talking about any stereotypes, all men and women being treated at the same level, a world that is diverse, equitable, and inclusive, where there is no differences in values, and celebrated. Everyone is being celebrated for what they are as an individual. So I guess then these really don't matter, right? We don't necessarily need to kind of really talk about these things, but I guess we are unfortunately living in a world where there are these unsaid biases. There is, in the workplace, at home, in our society, and everything. So as communities evolve, I think having a fairness is a fundamental fabric, right? And it is not good to have; it is must to have. I think something we all owe to our future, and to our kids and our generations and our families. I think it all starts from sort of following it at home and sort of bringing that into your workplace. And I guess Anand and many of our leaders here want to kind of make sure that we also sort of sign up, right? So we currently, I was just sort of looking through the numbers, we are about 12% of our workforce is having a gender diversity. So how do you sort of take it forward from? So I personally would like to take a goal, right, and see if we can move this needle to 20% by end of the year. So we would like to kind of see if we can have more women in our work. So taking a pledge from our side to see what we can do from our part of it, and then take it take it to the next level to see how we can also then get them more included into our diverse opinions and decision making. So with that, I would like to sort of really thank you to coming in and sharing your thoughts and views.